and I'm making this video because I'm angry. Because why the hell did nobody tell me about all of these things when I was going to join law school? My life would have been completely different because I spent so much time figuring all of these out on my own, and I really wish a 10-minute video explaining all of these things existed before I joined law school. Hey guys, I'm Advocate Akriti, and today I'm going to tell you some 6-7 things that I wish I knew before joining law school. And you should too, so that you are mentally prepared for what's coming. और गाइस, अगर आप लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन में हो कि आपको लॉ चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगी. बट गाइस, डू नॉट ट्रीट दिस वीडियो एज अनदर लेक्चर ऑन यूट्यूब. रादर, दिस इज जस्ट अ फेस टाइम call from your elder sister to give you some advice. So if you're thinking about pursuing law, or if you're going to start your law school soon, I hope this video genuinely helps. But before we move on to the main video, I have some amazing news for you all. अगर आप लोग 11th या 12th क्लास में हो और CLAT 2027 या CLAT 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो PW CLAT आप लोगों के लिए लेकर आया है अपने न्यू एंड फ्रेश बैचेस. CLAT रैंक बूस्टर 2027 बैच एंड CLAT Zenith 2.0 2028 बैच. इन बैचेस में आप लोगों को मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सपीरियंस फैकल्टी विद टॉप नॉच स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, DPPs एंड एवरीथिंग यू नीड टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर CLAT एग्जाम. और गाइस, अगर आप लोग CLAT और IELTS के साथ साथ अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी करना चाहते हो, तो यू शुड गो फॉर देयर प्रो बैचेस. CLAT Pro 2027 बैच एंड CLAT Zenith Pro 2028 बैच. प्रो बैचेस में आपको वो सब मिलेगा जो आपको बेसिक बैचेस में मिल रहा है. अलॉन्ग विद दिस, यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस, प्रिंटेड मॉड्यूल्स एंड PYQ बुक्स, खजाना पैकेज एंड अ लॉट मोर. दीज बैचेस आर योर अल्टीमेट प्रिपरेशन बडी टू मेक श्योर that you smash this exam, जैसे PW CLAT के स्टूडेंट्स ने 2026 में किया. सभी बैचेस के प्राइस आपकी स्क्रीन पर हैं. एंड गाइस, अभी CLAT प्रेपेथॉन वीक चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे सरप्राइजेस और डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. सो डोंट मिस द चांस एंड एनरोल योरसेल्व्स राइट नाउ. द लिंक्स टू ऑल ऑफ दीज बैचेस विल बी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. गो चेक देम आउट. अगर आप लोग मेरा ये कूपन कोड यूज करोगे, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट. Get yourselves enrolled and start your preparation so that you can score a very good percentile and get into the NLU of your choice, or any law school of your choice for that matter. So hurry up, because only a few months are left for 2027 CLAT attempt. All the best for your exam, guys, and I can't wait to see you all in your dream law schools. Lesson number 1. Law school teaches you the law, but it does not teach you how to practice it. लॉ स्कूल वकील तो बना देता है, लेकिन वकालत नहीं सिखाता. अब नाउ इट मे कम ऑफ एज आई एम सेइंग कि लॉ स्कूल तो यूजलेस है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, एंड यू नो दैट. इफ यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज फॉर सम टाइम नाउ, you would know how much I emphasize doing law from a good law school. So why do I say this? Law school does lay the foundation, and it does teach you how to do principal application of those laws. बट रियल लाइफ में जैसे उसको प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड दैट इज़ नॉट टॉट इन एनी ऑफ द लॉ स्कूल्स. आई हैड ऑलरेडी स्टडीड IPC एंड एविडेंस एक्ट बाय देन, एंड स्टिल व्हेन आई वेंट टू माई फर्स्ट इंटर्नशिप, मुझे एक भी डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है. सो लर्निंग एवरीथिंग वन डॉक्यूमेंट एट अ टाइम, हाउ लॉयर्स एक्चुअली वर्क, हाउ सीनियर्स आर एक्चुअली वर्किंग, हाउ लॉ फर्म्स आर वर्किंग, how courts work, the court procedures, and eventually you will learn how to think like a lawyer. But before that you have to learn a lot of basic things जो law school में नहीं सिखाई जाती. लॉ स्कूल में जो फाउंडेशन ले करी जाती है, उसके बिना आप वकील नहीं बन सकते. पर क्या वो इनफ है लॉयर बनने के लिए? नो, एब्सोल्युटली नॉट. And this is something I want to mention, because a lot of people just join law schools and they think that is enough to become a lawyer. No, life is not that easy. And अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर टॉप NLU से नहीं हो, जहाँ पे इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है कॉलेज, अगर आप किसी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, तो you will have to figure out on your own. Lesson number 2. Law choose karna is going to be the first decision that you make. Your decision making doesn't end, it multiplies.
आप लोग सोचोगे whether I should pursue corporate law, litigation, what kind of internships should I do? Should I start with trial court? I also want to experience high court, but when do I do that? Then I also need to have time for Supreme Court. How do I do all of these things in 5 years, 3 years? And what do I actually want? And then once you're done with your law school, तब भी आप सोचते रहोगे क्या मुझे जॉब करना चाहिए, क्या मुझे LLM करना चाहिए, क्या मुझे जुडिशरी करना चाहिए. जुडिशरी करना था तो मैंने लॉ स्कूल में क्यों नहीं सोचा. सो एट एवरी पॉइंट इन योर लाइफ यू विल हैव टू मेक बिग डिसीजंस विच विल शेप योर करियर. सो इट्स नॉट लाइक अ सिंपल डिग्री कि आपने डिग्री कर लिया 5 साल का, 3 साल का, एंड यू आर सेट. नाउ यू हैव टू जस्ट go and do a 9 to 5 job. It is a very different kind of profession which will involve a lot of decision making. Lesson number 3, I guess. So this is in continuation with the last lesson. जब तक हमें अपनी डिग्री मिलेगी तब तक हम सब फिगर आउट कर लेंगे, which is not true. ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं who have everything figured out उनकी डिग्री ख़त्म होने तक. अदरवाइज एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज्ड ओनली. सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू नॉट हैव थिंग्स फिगर्ड आउट. नाउ next is extremely important. As I told you that your real practice starts outside your classroom. I see a lot of people who think कि किसी दूसरे के CV में खेतान एंड को है, अमरचंद मंगलदास है. They are the only ones who are doing well in their internships. But काफ़ी tier 1 firms की internships में your work is not even reviewed. Internships are not supposed to be another line in your CV or another certificate with you. Nobody in real life after you graduate cares about your internship certificates. All they care about is your work, the kind of skills you've learned. तो आप अपनी शुरुआत के दिन की इंटर्नशिप्स में ये फिगर आउट करो कि आपको क्या नहीं पसंद है. If you don't like working for long hours, sitting in the office, probably you're not meant for a tier 1 law firm. These internships are the places where you discover what kind of a lawyer you actually want to become. एंड जितना जल्दी आप ये फिगर आउट कर लोगे अपने इंटर्नशिप्स के थ्रू, उतना कम स्ट्रगल आपको आपके ग्रेजुएशन के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल फिगर दिस आउट आफ्टर दे कंप्लीट देयर LLB डिग्री. सो इट्स बेटर दैट यू टेक योर टाइम इन दीज इंटर्नशिप्स टू लर्न skills, of course, number 1, and number 2, to figure out what you don't like and what you don't wish to do in the future. Now the next one might come as a shock to you. मतलब अगर मैं लॉ स्कूल जाने से पहले ये जानती तो मेरे लिए तो एज अ शॉक आता. Your first job does not define your future in any way. If you've been following me for some time now, you know that I started with a corporate job and today I'm practicing independently as a litigation lawyer. When I was interning at my first internship place, I was talking to a senior of mine and he told me कि अभी मैं criminal practice कर रहा हूँ and later I'll switch to tax and then I'll switch to civil corporate and I am still exploring. And at that time मुझे नहीं समझ आ रहा था. You had completed your LLB degree 2 years back. Why are you still figuring out? And now that I am almost 2 years into practice, I know that how it works. You keep figuring out unless and until आपको काफ़ी साल हो गए हैं प्रैक्टिस में. It is extremely difficult to choose a particular law that you want to practice in, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि लॉ स्कूल में कितना ही आपको सिखा लेंगे ना. Many discover their interest only after practicing, which is why this happens. So another thing is that if you're somebody who is very well spoken, who loves speaking, isn't afraid of speaking their mind, then a lot of people will tell you that बहुत बोलती हो तुम लॉ कर लो. So a few days back I was talking to a girl who is I think 17 or 18 years old. She's in her 17 years old. She's in her 12th standard and she was telling me, I also want to become a lawyer because all of my family, including me, I also think that I speak a lot and I'm not good at academics and I do not wish to study for my entire life, but I'm good at speaking and I think lawyers work is all speaking and it is physical work and I will be in courts the entire. And I was shocked. A 17-year-old girl doesn't know what actually goes behind the courtrooms. Not literally, because वहाँ तो judges होते हैं. But what goes on the day before the arguments. So as a lawyer, your work is definitely arguing in the court, being on the legs, but also I
cannot even remember the number of times I've pulled all-nighters before the arguments. Research, writing, drafting, thinking, editing, sending 1 draft, 2 draft, 3 draft. ऊपर से you have to stay updated with the Supreme Court judgments, all the judgments on all the practice areas that you're involved in. You have to stay updated, you have to read all the judgments. That's the only way you're going to excel in your practice. Lastly, so I knew that freshly graduated lawyers do not earn a lot before my law school, but I did not know how less they earn. Freshly graduated lawyers are exploited left, right, and center. If you are a first generation lawyer like me and you do not have your chambers waiting for you, you will have to spend years working for peanuts, because apparently, according to the seniors, this is the only way they are going to give you their experience. They are going to let you handle your cases if you work for free. Such less money कि आप लोगों का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा. So इस टॉपिक पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ and I can talk about it more, but I don't want to stretch it out in this video. Just wanted to give you a heads up. And yeah, thank you all so much for watching this video. I mean, thank you all so much for being on this FaceTime call with me. तो ये कुछ points थे जो मैंने mention किए, क्योंकि in the past few weeks I have been communicating a lot of 17-18-year-old kids, and सबके क्वेश्चंस और सबकी बातों से मुझे ऐसा लगा इन चीज़ों के बारे में अभी भी आप लोग अनअवेयर हो, विच इज़ वाई आई थॉट आई मेंशन दिस. इफ़ यू वांट कि ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिले लॉ स्कूल जाने के लिए, आई विल रिकमेंड यू ऑल वॉचिंग दीज वीडियोज़. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.